वेलकम बैक टू कॉर्टेक्स। आज हम करने वाले हैं क्लासिफाइड टेक्स्ट इनटू कैटेगरीज विद द नेचुरल लैंग्वेज एपीआई लैब। फर्स्ट वी विल स्टार्ट लैब। नेक्स्ट हम क्लाउड कंसोल को इनकॉग्निटो विंडो में ओपन करेंगे। वी कैन अंडरस्टैंड। नेक्स्ट हम टास्क वन पे जाएंगे एंड हमें सबसे पहले क्लाउड नेचुरल लैंग्वेज एपीआई को इनेबल करना होगा। सो कॉपी दिस, पेस्ट इट इन द सर्च बॉक्स, क्लिक ऑन दिस एंड ये ऑलरेडी इनेबल्ड है तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर ये इनेबल्ड नहीं होता तो हम कर सकते थे। नेक्स्ट यू हैव टू क्रिएट एन एपीआई की, जिसके लिए हम यहाँ जाएंगे एपीआई एंड सर्विसेज में, क्रेडेंशियल्स पर। Then you have to click create credentials, click API key, API की के मिलने के बाद हमें यहाँ से इसे कॉपी कर लेना है एंड एक अलग जगह पे इसे पेस्ट कर लेना है। लेट्स से मैंने इसे यहाँ पे पेस्ट करके रख लिया। नाउ नेक्स्ट क्लिक चेक माय प्रोग्रेस। नेक्स्ट हमें VM इंस्टेंसेस में जाना है। सो सर्च फॉर VM इंस्टेंस, क्लिक ऑन इट। ये रहा लिनक्स इंस्टेंस। अब इसमें हमें करना ये है कि वी हैव टू क्लिक ऑन दी SSH बटन। इसके बाद एक सेपरेट ऐसा विंडो हमारे पास आएगा, क्लिक ऑथराइज एंड हमारा SSH सेशन शुरू हो जाएगा। नाउ वी हैव टू रन दिस कमांड, जिसके लिए हमें यहाँ पे इसे पेस्ट करना है। देन हिट बैकस्पेस एंड ये योर एपीआई हियर वाला पार्ट हमें हटाना है। नेक्स्ट हमने इधर दूसरी टैब में इसे पेस्ट किया था एपीआई की को, तो हम यहाँ से इसे कॉपी करेंगे। देन हम इधर आकर इसे पेस्ट कर देंगे। नाउ हिट एंटर। नेक्स्ट यू हैव टू क्लासिफाई अ न्यूज़ आर्टिकल। So first you have to create a request.json file and add this text in it. So इसके लिए हम पहले फाइल का नेम कॉपी करेंगे, देन हम SSH पे वापस आएंगे, then enter nano, then paste the file name, hit enter। इससे हमारे पास एक एडिटर खुल जाएगा जिसमें हमें ये पार्ट पेस्ट करना है। तो कॉपी दिस, नाउ डू कंट्रोल X Y एंटर। अब ये सेव हो गया। क्लिक चेक माय प्रोग्रेस। नाउ कॉपी दिस, रन इट हियर एंड ये यहाँ पे कर्ल होके आ चुका है। नेक्स्ट हमें ये कॉपी करना है एंड यहाँ पेस्ट करना है। क्लिक चेक माय प्रोग्रेस। Completed. Next, the task 4 is to classify a large text dataset. First, we will copy this, hit enter. नेक्स्ट हमें बिग क्वेरी में जाना है, जिसके लिए हम इधर वापस आएंगे, सर्च बिग क्वेरी
Then हमें इन थ्री डॉट्स पे क्लिक करना है, then click create data set. नेक्स्ट डेटा सेट का नेम हमें ये सेट करना है, कॉपी दिस, पेस्ट इट हियर, and then we have to just click create data set. Now go to data set, click create table. Now create table from empty table which is already selected here, and the table name should be article data. So copy this. Under schema we have to add field and add these three fields. So come back here. Here it is. Click add field, article text, string null label. Next is category. Other is confidence, which should be float. Next, click create table. Check my progress. It is completed. Now we have successfully completed this lab. If this video was helpful, give it a like and subscribe our channel for more such amazing videos. Now you can just simply end this lab.